अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसे हमने टॉपिक लिया है आज के लिए, दैट इज़ आउटसोर्सिंग। 11th क्लास के लिए है ये। इसी आउटसोर्सिंग को हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यही आज का हमारा टॉपिक है। Another important trend that is increasingly reshaping business is outsourcing. Outsourcing can be defined as contracting out the non-core activities to the outside agencies specialized in those areas. The main aim of outsourcing is to obtain the benefits from their experience, expertise, efficiency, and even investment. At present, some core activities of the business are also outsourced. Let me repeat. And another important trend that is increasingly reshaping business is outsourcing. यानी कि आउटसोर्सिंग जो है ये एक इम्पोर्टेंट इस वक्त चल रहा है, इसको बढ़ावा मिल रहा है, ये बिजनेस को रिशेप कर रहा है। आउटसोर्सिंग कैन बी डिफाइंड एज कंट्रैक्टिंग आउट, यानी कि कंट्रैक्ट्स हो जाते हैं। जो कंपनी होती है इसकी जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए कंट्रैक्ट्स किए जाते हैं। आउटसाइड जो एजेंसीज़ होती हैं, जो स्पेशलाइज्ड होती हैं उन एरियाज़ में, उनके साथ कंट्रैक्ट्स किए जाते हैं। द मेन एम ऑफ आउटसोर्सिंग इज़ टू ऑब्टेन द बेनिफिट्स। इसका मुद्दा और मकसद यही होता है कि हम फ़ायदा उठाएं फ्रॉम दियर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, एफिशिएंसी एंड इवन इन्वेस्टमेंट। एट प्रेजेंट सम कोर एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस आर आल्सो आउटसोर्स्ड। आजकल जो है इस वक्त जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी आउटसोर्स किया जा रहा है। तो फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग क्या हैं? द मेन फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग आर, फर्स्ट वन दैट इज आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कंट्रैक्टिंग आउट। आउटसोर्सिंग implies getting the work done from outside which was earlier performed within the business premises। यानी कि जो अभी तक ये कंपनी खुद काम कर रही थी, फंक्शंस कर रही थी, उनको वो अब दूसरों से करवाती है, दूसरी कंपनियों से करवाती है, दूसरी एजेंसीज से करवाती है जो स्पेशलाइज्ड होती हैं उस एरिया में। फॉर एग्जांपल, अर्लियर मैनी कंपनीज हैव अपॉइंटेड देयर ओन सैनिटाइजेशन स्टाफ फॉर हाउसकीपिंग एंड सैनिटेशन फंक्शंस। But now these functions have been outsourced. That is, outside agencies have been appointed to perform these functions on contractual basis. Second one is generally non-core business activities are outsourced. Initially, the organizations outsource only the non-core activities. As they venture to experiment with outsourcing. Third one that is process may be outsourced to a captive unit or a third unit. Types of outsourcing, service providers. Outsourcing service providers इसको क्लासिफाई किया गया है कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स एंड थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसको भी क्लासिफाई किया गया है वर्टिकल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड हॉरिजॉन्टल सर्विस प्रोवाइडर्स। कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर इज सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ए गिवन काइंड टू ओनली वन फर्म। फॉर एग्जांपल, GE, General Electric। Third-party service providers operate independently in the market and provide service to another firms too. Scope of outsourcing, ये तो था कॉन्सेप्ट। अब हम स्कोप की तरफ जाएंगे।
It consists of four segments: contract manufacturing, contract research, contract sales and contract informatics. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंट्रैक्ट्स हो जाते हैं, रिसर्च के लिए कंट्रैक्ट्स हो जाते हैं, सेल्स के लिए कंट्रैक्ट्स हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन के लिए कंट्रैक्ट्स हो जाते हैं. The term outsourcing is very closely related to IT, enabled services, or business process outsourcing, BPO, or call centers. They provide customer oriented voice based service. Call center constitute 70% of the BPO industry revenue. नीड फॉर आउटसोर्सिंग, कितनी ज़रूरत है आउटसोर्सिंग की, कितनी अहमियत है आउटसोर्सिंग की. रीजन्स और मेरिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग और एज अंडर. और इम्पोर्टेंस कहिए, फोकसिंग ऑफ अटेंशन. फर्स्ट वन दैट इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन. Outsourcing of non-core activities to outside agencies enable the business firms to focus their attention and resources on core activities for better efficiency and effectiveness. Quest for excellence. Outsourcing enables organizations to focus themselves on those activities which they can do exceedingly well by virtue of their basic strengths. They extend their capability through outsourcing the remaining activities to those who excel in doing them. In this manner, they raise their total performance. Cost reduction. Outsourcing enables the business firms to undertake large scale production and thus achieve economies of scale. The factors like division of labor, specialization, and differences in prices of factors of production across the countries also reduce cost. Fourth one, that is growth through alliance. Outsourcing leads to a reduction in the investment requirements because the outside agencies have already invested in those activities. Fifth one, that is flip to economic development. Outsourcing generates entrepreneurship, employment, and exports in a country. For example, in India, IT sector is providing global outsourcing in software development and IT enabled services, due to which there has been a rapid growth of entrepreneurship, employment, and exports. Concerns over outsourcing or limitations of outsourcing. Due to the following reason, there is still an element of uncertainty regarding future of outsourcing. Having become part of 21st century's corporate world, it is bound to stay on. However, will it keep growing at present pace? Debatable. First one, that is confidentiality. Outsourcing involves sharing a lot of information. Therefore, outsourcing agency is required to preserve the confidentiality of the data received from business firms. Second one, that is ethical concerns. It is unethical to outsource the work to countries having wage discrimination on the basis of sex of the workers or to the agencies which employ child labor. Third one, that is resentment in the home countries. Outsourcing activities result in more employment or jobs. Hence, when organizations contract out the other activities, it results in resentment in the home country, particularly when there is problem of unemployment in the home country. Fourth one and the last one, that is sweet shopping. The firm that goes in for outsourcing looks for utilization of existing skills
of the vendor rather than development of his skills. Thanks.